Astronaut Shubhanshu Shukla returned to India in the early hours on Sunday, a month after the successful completion of the historic Axiom 4 mission. After landing in Delhi, Shukla met with ISRO Chairman Dr. V. Narayanan and Delhi Chief Minister Rekha Gupta, as well as Union Minister of State for Science and Technology Jitendra Singh. Now, Shubhanshu Shukla is also expected to meet PM Modi on Monday, which is the 18th of August, and will also travel to his hometown Lucknow soon after. Group Captain Shubhanshu Shukla will also participate in the National Space Day celebrations on the 23rd of August. Remember, Shukla's name also fared a mention in the PM's Independence Day address from the Red Fort. Take a look at Group Captain Shukla's previous conversations with the Prime Minister. शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीजें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस ले। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा, तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं। लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है, और अर्थ हमारा एक घर है, और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। Well, to share more details on this, we have my colleague Pallav Bagla joining us on the telecast. Now, Pallav, you've been tracking this story since the very first day. Now, Group Captain Shubhanshu Shukla is back in the country. Walk us through the journey and the significance of his trip back home. The significance is very big. He is now 21st century hero for India. Remember, the first astronaut to go into space was Wing Commander Rakesh Sharma in 1984, and we should never forget that. Group Captain Shukla's journey is a beginning of a very big mission which India has launched. Group Captain Shukla is now back in India. His real work will start now that Gaganyaan program is taking off. He's taken the first baby steps for India's Gaganyaan program by participating in the Axiom 4 mission, which I sometimes called Mission Akash Ganga, where he spent 18 days in space. In all 20 days, 18 days were in the International Space Station, becoming the first Indian to go there. And now he has to participate in India's Gaganyaan program to make sure that it becomes a success. If all goes as per plan, by 2027, India should launch an Indian from Sriharikota into space, and Group Captain Shubhanshu Shukla's contribution in that program is going to be immense. Prime Minister Narendra Modi has already laid out a plan that India should launch an Indian space station by 2035 and launch an Indian on the moon by 2040. But between this, when he meets the Prime Minister
early next week. I'm hoping the Prime Minister will definitely ask him, because Prime Minister Narendra Modi, who is himself a person who loves space, had given homework to Shubhanshu Shukla when he was in space. So Group Captain Shubhanshu Shukla will have to now submit his assignment to the Prime Minister of India, who had asked him to document every work, every move while he was in the Axiom 4 mission, and he spent more than a year at the facilities of SpaceX, Axiom Space, and NASA, learning all the tricks of human space flight. So I'm hoping his assignment is now completed. He is now back in India. He will now gel with the Indian Space Research Organization for the Human Space Program and the Gaganyaan program, which India has, and India is spending an enormous sum, which is about Right. 33,000 crores, is going to make a tremendous difference for India as it progresses towards a Viksit Bharat. Right, So Group absolutely. Captain Shukla has taken the first steps for India's move towards a developed country. He is back in India, homecoming for him, a great day and a great joy for India.